Friends, welcome to my YouTube channel. So let's discuss today's price action. So here in Euro USD, we had an opportunity today. You can see the price was in range, and once the market tapped the bottom of the range, I wanted to see some sort of reversal from here. In 4 hour, we can see that 1 AM reversal, and at the same time, you can also see that we do have market has GxT hit the equal high. Okay, and now trying to continue its move to the downside. We had a key level at around this area. You can see we have fair value gap, a big fair value gap. So there was a high chance that the market will continue from here. Okay, so after this 1 AM candle closure, we shift to our 1 hour time frame, and in 1 hour, what I saw that market was trying to continue its move to the upside. Market had created the low bottom of the day, low of the day. In 30 minutes, we can see that we had a change in state of delivery. Although after this change in state of delivery, market retraced deeper and then continued its move to the upside. Okay. So for me, it was like, okay, we have hit liquidity area, sell side liquidity, and now we are trying to continue its move to the upside. So here in 30 minutes, what I saw, once I see that market is continuing to move to the upside, I mark these opposing candles. Okay, so we have these opposing candles. So I wanted the market to get a swing point near these opposing candles so that I can take an entry. So here we can see that we have candle 1, candle 2, candle 3, but when you look at the lower time frame, you will find that in higher time frame these are bearish candles. Okay, but in lower time frame, what you will see, these are just retracement candles. These are not bearish candles. If you see in 30-minute time frame, you will see that these are continuing move to the downside, but on 15 minutes, you will see that market is struggling to continue its move to the downside. And we have this opposing candle. We have the support of these opposing candles, which is acting as a order block. And here what I saw, that we had a candle 2 formation. Okay, so we had a candle 2 formation in 15 minutes. So in 3 minutes, we saw that we have change in state of delivery. Market broke this high and continued its move to the upside. And also, if you look at the 5 minute, you will see that we are
in this consolidation range. Okay, so market came down, took the bottom of the range, and then just reversed. Okay, so it was a good entry. It easily gave 1:2. After this expansion move, I knew that there were high chance that the market will go inside the range, because market has already traveled quite a lot. So I did not. So I was not sure that whether it will continue its move to the upside, because if you look at the height of this candle, so it's almost given the equal length like previous candle. You can see this is exactly the same height candle. Okay, so I knew that after this expansion, you can see the third day, Sunday, this day was also a similar height. Okay. So the candle has already traveled its average range. So I was not sure that it will continue its move to the upside. तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की. तो यहाँ पे गोल्ड ने एक break show किया. I don't know whether it was some sort of new or what. I don't know exactly what happened. You can go to Forex Factory. Was there anything specific at that moment? At 11 a.m. we had FM number Waller speaks. So yes, so yeah, this was during 11 a.m. So it must be some sort of a news, some sort of thing. I don't know exactly what she said or he said. But if let's suppose we try to find out our daily bias on gold, and first I can see that market is completely inside this range. Okay, we are in between these range, and slowly it's just shrinking. And also, if you look at this trend line, so gold was just expecting this trend line also. And apart from those confluences, let's suppose if today's market, today we want to continue its move to the downside, let's suppose, then first I wanted the market to open, continue up, then continue down. But here what gold did, it just opened, took the previous day low, and then continuing its move to the upside. You can see that we had some sort of range formation. Okay, now it's continuing its move to the upside. So here in gold, we did not get any chance to be in the trade. Okay, it kept on continuing its move to the upside. We did not get any chance to be in the market. And once the market reached at this area, I did not want to take any buying trade at around this area, because market has already expanded quite a lot. So after this sort of expansion, we will wait for another phase of price to unfold. Here in New York session, we had two expansion candle, but still like you see that it just kept on continuing its move to the upside. We did not get any chance to be in the trade. Okay.
dices were a little tricky for me, I would say. Here we can see that the market is continuing its move to the downside. Okay. So market came down at around this opposing candle. Okay, and it also disrespected this fair value gap. So all these things were indicating that the market wants to continue its move to the downside. Okay. When I went to hourly time frame, I find that if let's suppose my bias is bearish, so I wanted for the market to at least create some wick so that we can continue its move to the downside and go somewhere around this area. Okay. But we did not get any sort of wick formation at the opening price. So it was a little confusing for me because I just wanted a wick at the top of during the opening price. So I just wanted a wick during the opening price, but it did not form any wick. So for me, it was like I was not very sure about the daily bias. Although my bias was bearish, but the daily file was not supporting my bias. Okay. And also when we came to the 4-hour time frame, what I saw that we have already expanded quite a lot. Okay, so whenever we get this sort of expansion, we usually see some sort of retracement or consolidation. Okay, so I was expecting some sort of retracement, and you can also see that we have some sort of V formation. Okay, but here when I observed the price, I saw that market is forming some sort of range. You can see that we are forming some sort of range here. Okay, if you look at the 1-hour candle, we are see this candle. We have a top and bottom, and the next candle was inside this range. Okay, and here uh, in NQ also we had some sort of range. Okay, so this is the only time when I thought that okay, it just a retracement. We can continue its move to the downside. Okay, our bias might be valid, and we can continue our move to the downside. Okay, but in 4 hours, when I saw this sort of candle, I was little hesitant to take a sell trade just after that. Okay, but it was a valid trade. Okay, see, we had some sort of range, and here what we can see, if you go to the 5-minute or 3-minute time frame, we have a setup. We were in this range, and market manipulated the high of the range, and here it's forming some sort of SMT. If you look from here to here, it's an SMT, or from this high to this high, it was forming some sort of SMT. So once I confirm that market has taken this high, through SMT and now continuing its move to the downside, immediately my eyes shifted at around this area. I wanted the market to take out this low. Okay, so in 3-minute time frame, we had this opportunity at around this area where the market continued its move to the, because let's suppose if I take entry after 3 minutes here, it would be the stop loss
would be quite big. So let's say if I place an entry somewhere, it's a huge stop loss. Okay, so what I wanted to see, market continuing its move to the downside, and then we can place our entry. After that reversal, we could place our entry somewhere at like at the opposing candle. Okay, at this candle low, let's suppose. Good. So I wanted to place an entry somewhere around here. Stop loss will be above this candle. Okay, so it was pretty small stop loss compared to the stop loss where I had compared to this stop loss. Then it continued its move to the downside, but so yeah, this is pretty much for the day. Let's start our backtesting. Let's see what the news today. Let me just check कितना टाइम अभी हो रहा है. 10 a.m. So it means we have already passed 9:30 candle. Okay, so let's move next day और हम देखते हैं कि फिर हमें क्या मिलता है वहाँ पे. तो आज डेट है 26 फरवरी. तो 26 को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है, तो हम वेट करेंगे 9:30 ओपन का. अगर हम वीकली कैंडल को अगर एक बार देखते हैं तो वीकली कैंडल बियरिश है. वीकली कैंडल बियरिश है, बट मार्केट यहाँ पे हमारे पास एक वाईएम में फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने हिट किया है. ओके, और वहां से हमें एक रिजेक्शन मिल रहा है. और अगर मैं ES अगर मैं NQ और ES की बात करूं तो हमें एक SMT देखने को मिल रही है. तो यहाँ पे हमें एक वीकली SMT देखने को मिल रहा है ES एंड NQ में. अगर अब हम डेली पे आ जाते हैं तो NQ ने इस रिलेवेंट लो को हिट किया है और रिट्रेस कर गई है कंप्लीट. It has manipulated this low, and here also we can see some sort of retracements. So now let's move to 1 hour time frame, and I want to see what the market is doing. So see again,
if my bias is bullish, I wanted for the price to open from the low of the day, then continue its move to the upside. So that thing is missing here. So this is a red flag for me. And again, if I let's suppose watch the price action carefully, I can see that the price action is very corrective. Okay, you can see the price action; it's dying. So there is very high chance that market may take these highs. Okay, this is I think previous candle high, previous day high. Okay, there is a very high chance that the market may take the previous day high and then continue its move to the downside. Okay, and here we can get some sort of SMT with ES. Okay. So I will follow it closely. Let me just plot session break. Okay, so here in YM we can see that the market has already taken the previous day high. Okay. So what I want to see that market hit this relevant swing and then ES, YM and NQ, all three assets continued its move to the downside. So let's move to the 30-minute. Okay, by mistake I just clicked 1 hour. No issue. So here what I can see, it's 8:30. Okay, perfect. So 8:30. So at 8:30 what I can see that we are forming some sort of range. In this range, and market has taken the low of the range and also taken the high of the range. Taken the high of the range. Okay. And then after taking the high, it just completely continued to the downside. Okay. We can see that we do have a change in state of delivery in 30 minutes. Okay. So this is quite good. But again, the thing is that usually when we see, okay, here EYM has already taken the high. Okay, so let me just check the 4-hour profiling. So how is the 4-hour forming? Okay, this is exactly what happened today. Okay, I can see the similar sort of price action which today, like it's 25th of February and today is 20th August. So जो आज का ये प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ एनक्यू में आज. तो हम वेट करते हैं. ठीक है, अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 8:30. ठीक है, हम 3 मिनट पे जाएंगे और 3 मिनट पे एक वापस से 1 आवर पे हम जाते हैं और 1 आवर पे हमारे पास काफ़ी सारा अभी ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है, लो ऑफ द डे. बट यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस माइनर ऑब्जेक्टिव को हिट कर दिया है, तो हम वेट करेंगे मार्केट के दोबारा से कंटिन्यूएशन कैंडल क्रिएट करने, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को हिट किया है, स्लाइटली हिट किया है, जरा सा मैनिपुलेट किया है. ओके, और वापस से गिर गई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट दोबारा से इसको मैनिपुलेट करे और दोबारा से कंटिन्यू नीचे की तरफ. मार्केट कंटिन्यू करना शुरू कर चुकी है. हम वेट करेंगे 9:30 के ओपन होने का. यहाँ 9:30 ओपन हो जाए. हाँ, यहाँ से 9:30 ओपन हो रही है. ओके, 4-आवर प्रोफाइलिंग में हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी नीचे की तरफ. हम आराम से 3 मिनट पे जाएंगे. वहाँ पे भी 9:30 मार्क कर देते हैं.
मार्केट ने लो को हिट किया है, ठीक है, बट अभी मैं वेट करूंगा कि अगर मेरा बायस बियरिश है, ठीक है, तो मैं एक इंटर कैंडल चेन सेट ऑफ डिलीवरी का वेट करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने अपने ऑब्जेक्टिव को हिट कर दिया है, जो कि लो ऑफ द डे था, और उसके बाद हमारे को एक न्यू फेज ऑफ प्राइस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। स्टिल मेरा बियरिश ही है, और मैं वेट करूंगा आराम से 3 मिनट पे कैंडल फॉर्म होने का। 10 AM मार्केट ने इस हाई को ले लिया है, और हमें यहाँ एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन चूंकि मेरा बायस बियरिश है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट कंटिन्यू कर सके नीचे की तरफ। मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई को टैग कर लिया है और अपने करंट डे लो को भी हिट किया है, तो बहुत कम चांस है कि मार्केट ऐसा कुछ करेगी। मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आके अपने लो को लिया, फिर ऊपर चली जाए, तो ये एक सीक एंड डिस्ट्रॉय सॉर्ट ऑफ हो जाएगा कि इसने अपने लो को लिया, फिर इसने अपने हाई को लिया। तो ऐसा जनरली ऐसा करना नहीं चाहिए मार्केट को। तो हम वेट करेंगे 3 मिनट में, हमें मार्केट वापिस से बियरिश सिग्नल दे तो हम सेल की तरफ जा सके। देख सकते हैं मार्केट ने जैसे ही इसे हाई को लिया है, ठीक है, जैसे इसके हाई को लिया है ये कंटिन्यू करना चाह रही है नीचे की तरफ। तो हम 2 मिनट पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिक्कत इसमें यह है कि 3 मिनट का चार्ट ओपन नहीं हो पाता है इसमें। तो हम 3 मिनट 1 मिनट पे ही 2 मिनट्स पे ही शिफ्ट रहते हैं। वेट करें आराम से, और जब भी हमें आप ये जैसे अगर हम इसमें एंट्री अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करने लगती है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट के हाई को लेने का। जैसे ही मार्केट अपने हाई को लेगी फिर हम नीचे की तरफ सेलिंग देखेंगे। मार्केट कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ। ओके ओके, और यहाँ पे हम अपने बायस को अब छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा बायस रॉन्ग हो चुका है। मार्केट मार्केट ने अपने लो को लिया और कंटिन्यू करती चली गई ऊपर की तरफ। सो दैट्स ऑल राइट। ये इसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा डेली बायस बुलिश था। इस एसएल के बाद मैं एक बुलिश, ओ सही, तो बुलिश था तो मैं सेल क्यों देख रहा था? ओके ओके ओके, सो रीजन 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 ये था कि मार्केट ओपन हुई और कंटिन्यू करती चली गई। ओके, सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट हाई ऑफ द डे फॉर्म करेगी, लो ऑफ द डे फॉर्म करेगी, फिर ऊपर जाएगी। बट मार्केट ने क्या किया कि 9:30 के कैंडल पे लो ऑफ द डे फॉर्म किया इसने। ओके, उसके बाद कंटिन्यू कर गई ऊपर की तरफ। सो अगर मैं 4 आवर की प्रोफाइलिंग देखूं तो ये कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ। सो ये 10:24 है, तो अभी भी हम एक एंट्री बना सकते हैं इसमें। कैसे? क्योंकि अभी 4 आवर की एक नई कैंडल हो हुई है, इसने अपने लो को फॉर्म किया और अब ये एक कंटिन्यूएशन मूव देने के उसमें है। तो मैं वेट करूंगा अभी एक न्यू
30 मिनट के कैंडल के ओपन होने का। प्रॉब्लम अभी अब यहाँ ये है कि मार्केट ने ऑलरेडी हाई को ले लिया है, तो जब भी मार्केट इस तरीके के सिचुएशन में आए तो हमें एंट्री, अगर हमें एंट्री यहाँ कहीं मिल रही है तब तो ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिल रही है और ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्टिव रीच हो चुका है, ठीक है, बेशक वो माइनर ही क्यों ना हो, तो फिर वो एक इनवैलिड सेटअप जाना जाता है, तो यहाँ से कोई सा सेटअप नहीं लेंगे। देख सकते हैं मार्केट कितना स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। लेट्स सपोज अगर आपने लिया भी होता इस ट्रेड को, मान लो समवेयर एट अराउंड, वैसे तो ये इनवैलिड सेटअप हो जाता है क्योंकि चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नीचे की तरफ हो गई है, इसने अपने लो को भी नहीं लिया वापस से, अगर आप लेते भी हो आफ्टर दिस चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके, तो ये बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन। सो आपकी एक्चुअल एंट्री कहीं बन रही थी तो ये यहाँ बन रही थी। Okay. तो स्टिल एक रिस्की एंट्री थी। अगर आप यहाँ से आफ्टर दिस चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो ये वैसे ही मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे लंबा रुकता, क्योंकि 1:2 जाने के लिए इसको ऑलमोस्ट अपने पूरे दिन का इतना मूव है वो देना पड़ता है, तो ऐसे होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है। सो आज का दिन कुछ खास नहीं था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट वैसे फर्स्ट है, मार्केट एक कंसोलिडेशन उसमें इंडिसीजन सॉर्ट ऑफ कैंडल फॉर्म हो रही है, तो नेक्स्ट डे को प्रिडिक्ट करना इस ऐसे मार्केट कंडीशन में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑल दो अगेन मेरा बायस थोड़ा बुलिश ही है, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को लिया है और रिट्रेस करके कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। बट अभी जो मार्केट कंडीशन है वो एक कंसोलिडेशन का मार्केट कंडीशन है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। हम वेट करेंगे प्रीवियस डे हाई या लो के वेट के टैग करने का, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अगर मैं 4 आवर प्रोफाइलिंग की बात करूं तो अगेन हम एक रेंज में है, मैं वेट करूंगा मार्केट के रेंज को लेने का। और आज का दिन भी अगर मैं देखूं तो मार्केट बिल्कुल स्लोली ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मतलब है कि मार्केट वीकनेस शो कर रही है। अगर मैं हाई एफ पे मार्क कर रहे हैं तो again we can see that market is struggling to continue its move to the upside. It's just moving slowly. Okay, so I will wait for the market to manipulate this area. Okay, once it manipulates this area and give us
a nice GxT on 30-minute. Okay, today is 27th of Feb and we have a durable goods order. So we do have a news, impact news at 8:30. So in that news event, what I would like to see, I would like to see a manipulation above the previous day high, and then we want a move to the downside. So let's see what it does next. Okay, it did not manipulate the high, just continued its move to the downside, and that's good. It means that the market wants to continue its move to the upside, because we can see that market has manipulated this relevant swing, and at the same time ES is giving us some sort of retracement. If we move to 15-minute time frame, so let's just move to 5 minutes or even 3 minutes to see what does we get. We are about 9 a.m. candle is about to open, so let's wait and see. You can see that 9 a.m. candle continue its move to the upside, because market has already manipulated and we have got a change in state of delivery. Okay, so now on 3 minutes you can see that market is continuing its move to the upside, but we did not get any sort of change in state of delivery. So I will wait for change in state of delivery, then I would like to take up buying order at around this area. Just wait for one more candle. So now we are seeing some sort of manipulation, a consolidation. So usually when we get this sort of consolidation, then I want to move to the downside, then continue its move to the upside. Okay, we got this move. Let's see. Perfect. Let me just check what's the time. Okay, 9:30 has opened. You can see 9:30 manipulated the low, manipulated this, and now trying to continue its move to the upside. So after changing state of delivery, I will be looking for a buying trade. Let me just check the 1 hour or 4 hour time frame. Okay, so that's all right. 8:30 can manipulated the low, and then 9:30 continuing its move to the upside. Just 2-minute time frame. Okay, perfect. So here I would like to place an entry. Stop loss will be below the low, at the low of these candles. Take profit will be 1:4. Okay. So it was the sharp loss. That's right. So let's see what went wrong. The only thing which I don't like was that, like, these are just
weak price action, which was telling me that it does not want to continue to move to the upside. Okay, so this was the only clue which I had, because daily time frame is completely inside the range. So give me just a second. Today the batch was pretty difficult. Okay, so usually when you get this sort of days, you should be very cautious before taking any trade. Today the only clue was that the price action from my experience, what I'm seeing, that the only holy grail is price action. It doesn't matter what your setup is telling what. So basically trading is an art. Okay, so आपको वो आर्ट सीखना पड़ेगा. सेट जस्ट एक ग्लिच है उस आर्ट में. वो सेटअप एक एंकरिंग टाइप का फॉर्म हो करता है. जस्ट एक एंकर है जो कि आप, जैसे जब आप एक रिदम में फ्लो करने लग जाते हो ट्रेडिंग के एक रिदम में, तब सेटअप जो है वो आपको एंकरिंग काम करता है. केवल सेटअप सीख के आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते. ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन आना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे.
मार्केट ने इस हाई को लिया है और उसके बाद रिट्रेस थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद कंटिन्यू करके नीचे की तरफ। और अगर हम सिमिलरली 3 मिनट्स में देखें तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 9:30, ये 9:30 ओपन हुई है और कंटिन्यू कर गई है नीचे की तरफ। ओके, तो मैंने बिफोर 9:30 ओपनिंग ओपन करी है। यूजुअली मैं 9:30 के बाद ओपन प्राइस ट्रेड लेता हूँ, बट शायद मैंने ध्यान नहीं दिया है। Move to next day. So here we can see in YM we are getting some sort of secant square profile. So usually when we get this sort of profile, then we see some sort of continuation of the move. We have Friday, and as we are seeing some sort of continuation, okay, consolidation, then continuation. So today I will also expect some sort of continuation of the move. Here in 4 hour, what we can see that the market is forming some sort of consolidation. Hit the previous day high, and let me just check whether today is any news or not. 28th of February, we have 8:30 news. Okay, we have 8:30 news today. And we can also see that we are having sort of SMT. Okay, market has taken this, ES has taken this high, but NQ could not cross that high. This is our 6 a.m. candle. Let me just mark. This is our 6 a.m. candle. Okay, price trying to continue its move to the
downside, and we do have some sort of SMT. We have an SMT with this candle, these candles, and now market trying to continue its move to the downside. Just go to 30 minutes, and here we do have SMT. 7:30. Let's wait for 8:30 candle to see what it does next. 8:30 open. Let me just check what 8:30 does, because it's a impact news, so I want to see. Okay, it just continued its move to the upside, and then continued its move to the down. So much frustrating. I don't know why TradeStar did not give a 3 minute time frame or like 4 hour. I don't know why. Like, these sites really annoying. What we can see, that price action is again inside a range. We are still inside this range. So we are in a bigger range, we are in a smaller range. And if let's suppose I go 4 hour time frame, you can see that 4 hour is completely inside the range. Give me time. What we can see here, that A30 has manipulated this key level. 830 has manipulated this key level, and also we do have an SMT with YM. And if I say, but the price action is very creepy, so let me just wait for 15 minutes to open. Again, just open and took out this low. So after taking this low, I just want for the market to continue its move to the upside, because we were in the consolidation, and once
The market takes the low, the range, and gives change state of degree. There is a high chance that it will continue its move to the upside. But the issue is that D is very bearish. Taking a buying trade will be a risky one, in my opinion. Taking any buying trade. It could be against the bias, so I don't want to take entry. And you can also see that we are still inside this range. So for me, I don't want to take this trade right now. It's a 10 a.m. candle, so 1 4-hour candle has closed. Okay, so now a new 4-hour candle has opened, and it's just trying to continue its move to the upside. So let's see what it does. So completely inside the range. I don't want to take any trade here in this range. I just want to see continuation, and I would like to take that trade because price move very choppy. It okay, continuing. Okay, okay, wait, perfect. Here I would like to place our trade. Sell will be below these candles. This is 30. Let's see. But again, this is against our buyer. This is against our bias. First thing, the second thing, it has taken the high of this range. So whenever market takes the high of this range, then don't want to take trade. It can just take you out like this. Why? Because it has already taken the high. So once it taken the high, there is a high chance it can a new phase of price delivery can open. So again, this was a difficult day for trade. In this way, we have just completed our March trading session. Okay. So in March, February trading session, and then new month will open, and you can see the results. Session results. We have almost 46% win rate for 2 months. 7 losers, 6 winners. Okay. Total I took 8 trades where I had a 37% win rate. We have 3 winners. Okay. And 5 losers, 46% win rate. So showing 80, like 50% win rate. Okay, that's all right. I took 16 trade total. But I don't know what it's showing. It's for the all these sessions or just this session.
Okay. For this session, we have a 46% win rate. We still have a lot of room for improvement, I would say. We still have a lot of room for improvement. Yeah. So let's finish this session right now, because I have already completed February month. It took us like 4 days. Today is fourth day. So okay, let's do for 1 week, and then we can just finish this session. Okay, that would be good. Let's, let me just make a copy. Let's see. Let me just delete this previous one because it's not plot the session indicator on its own. Like filter, filter. Okay, let's say delete this. Okay, now delete it. That's it. Move to the next session. Okay, go to weekly time frame. Here in the weekly time frame, what I can see that the market is trying to continue its move to the downside, and we do have sell side liquidity resting below. हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये रहेगा, उसके बाद आज ट्यूसडे तो मंडे ओपन forms the high, continue its move to the downside, forms the low, or can take this low and then continue its move to the upside also. Right now I will be looking for sell trades. So let's switch to the daily time, 4-hour time, and in 4-hour time frame what we can see that the market is approaching this the swing. So it is very near to this level. So for me these are just, but it's in 4-hour. Do we have
impact news to do? 3 March, yes, at 10 a.m. we do a high impact news. So let's wait and see what the market does. So here we can see in ES market has tagged this low. Okay. To have this key level somewhere I would like to see swing formation. Okay. Let's go to here we have formed the relevant swing. Once the market tags this swing, then I would like to look for sell trade till these areas. But market has already taken the previous day low, so it's not a good sign. Let's keep continuing. Let me just mark the 930 pin. Okay. We do have an SMT there with, you can see that ES has taken the high. So here we can see that we have formed a candle 3 C2 candle, I would say, and then now we can for a sell trade. No, I did not take any trade. I was just looking, but I was not actively trading, I would say. I was looking at the chart, but I was not actively trading. No trade for me today. So here we can see that the market, we have taken this relevant swing through SMT, and now we are about to 930 is about to open. So let's see. Just continued its move to the upside. Market has taken taken its objective, because let's go to daily. We can see that hit this low. So now we don't know whether it will continue its move to the downside or what. So let's wait. So whenever we get this sort of position, yes, I am. Here again, we can see that market, we got another SMT, but we will wait because we are not seeing any sort of continuation of the trade. Just wait. Now it's fine. We can see that we do have a strength switch, because ES is continuing its move to the upside, and now we have
our NQ, which is continuing its move to the downside. Okay. What is GLGT? Is it any sort of like short form of any slang or no? Take a trade at around this area. Because what the market did, it just took the high of this candle and now to continue its move to the downside. And market has also taken this relevant swing to SMT again. So now for me it's a sell trade. We have lot of move pending. I have managed my stop loss. To exited from this trade. It was a nice trade. Good night. Thanks, Ghost. I don't know your name, but I have written 36. So good night. Next trading session. So today is Friday, and we had Monday, okay, Thursday, Friday, Monday, Tuesday. Today is Wednesday. Okay. So today is Wednesday, and what I can see that uh, ES is forming candle 2. This is forming the candle 2 for swing point after hitting this level. Okay. Here we can see market hit this key level and now forming some sort of candle 2. But here in okay, they traded, yes. Usually I take trades in M2.
So a trade history, I don't know from where I can get the trading history. Trading history. Okay, let's leave it. So here what I can see that NQ is forming candle 2. So now I will be expecting Wednesday to continue its move to the upside, move to 4-hour time frame. In 4-hour, what we can see that market is in some sort of consolidation. We are in between, ranging between candle, took the high and now continue its move to the downside. Okay, and if we look, zoom out, then we can see we are in between this big consolidation candle. Let's move to 1-hour time frame and see what it's doing. So here we can see that market did change in state, gave change in state of delivery here. Okay, but after the change, after giving the change in state of delivery, it went completely inside the range. So now what I would like to see, I would like to see manipulation to this range and then continuation. Okay. We can see that market has manipulated this high and then also manipulated this low. Okay, let's wait and wait for, let me just check, do we have any news today? What is 5th of March? Then on 5th March, yes, we do have news at 10 a.m. So that's all right. Let's move to 30-minute time frame. And we do have this swing and then we do have this swing. So let's see what it does. I will wait for 9:30 to open, then I will take any trade. And my bias is still bull. Sorry. Here we can see we are getting some sort of swing point. Okay. Let's move to 30-minute time frame. And see what we do have a bias which is bullish for our time frame. For our time frame is we have 2 a.m. reversal, 6 a.m. continuation, but as the market is still inside the range and our bias is bullish. So I would like for the market to retrace all the way back up.
Let's move to 3-minute time frame and just wait and see what the market next. And by looking at these price action, I can also say that market is showing some sort of retracement. It's not a continuation move. You can see that market is just retracing. So let's just wait. We do have this 9:30 open. Here we can see that it did not manipulate the low. Okay. Thank you. We do have an SMT. Now perfect. We get a closer above this, and we do have an SMT with ES. So we will expect some sort of continuation of the trend. Take profit will be 1:2. You can take a limit order also at around this area. So this will be good because then I was getting quite big. Let's place our okay. So it was a difficult day to trade. Okay. Completely inside the range, and then just took out this trade. That's all right. Yeah. As month. It was a nice candle 2 formation. Okay. So our trade was, let's suppose if we would have taken trade at around this area also, then also it would be a loss. So we could not do anything. Market had taken this big low. Okay. So that's all right. We could not do anything about the losses. So move ahead. So market continued to the upside, but after like in PM session, not in AM session. In AM session, it just consolidated. It did not move anywhere. It was just consolidating, and then in PM session just continued it. I just wanted this move in AM session. I just wanted this sort of move in AM session after
like around this candle. After this, when this candle was printing, I just wanted this sort of move. That's what I wanted. You lost 1 lakh. Like it was a prop firm money or it was your own money? Like did you like yeah, in trading we do get losses. Like it's quite common. But 1 lakh loss, like it's your own money or you lost a profit or you lost a funded account? What? Yeah, I also do lose money, but I take small challenges because I have not, I was not trading for like year and a half, so that's why. Okay, okay. So see, if you lose any valuation account, so first of all, I would say just take like not more than a 10K account. Okay, which is roughly cost around 6,000. Okay, just take a small account of 10K and try to pass that account. A 10K account will cost you around $6,000, and I would say don't go with futures prop firms. Just take normal two-step challenge. Okay, and if you are able to pass them consistently, then move to futures account. Because futures are quite difficult to trade. Don't trade futures. No, like see, the price action of NQ, NS, and ES is similar to US 30, Nash 100, and S&P 500. You can take trade in US 30 and Nash 100. In in if you want to take trade in ES, then I would the spreads are quite high in prop firms trade. Like you can see the price action will be almost 99% similar. So whatever happening in this futures chart, the same thing will be happening in Nash 100 and US 30. I also don't trade in futures. Like I do backtest in futures, and I do backtest. Like let's suppose I want to trade the gold futures chart. Then the price action of XAU USD will be similar to whatever I am getting the chart of gold future. You know. No worries, Srimantha. Like these things does happen. You don't have to like you have to cope with these things. You will have to cope with these things, and that is the reason why I don't like futures prop firms. They are I think they are cheap, but still there are a lot of restrictions and limitations. Drawdown rule are like difficult drawdown rules.
See, I would suggest that if you lose any evaluation account, like, see, take my suggestion. If you lose any evaluation account, wait for at least 3 weeks, 2 to 3 weeks, or minimum 1 month, and do a back testing of like 1 month, 2 week, 3 week consistent back testing. Okay, try to do paper trading. Don't try to, the more आप, वो कहते हैं ना, जितना आप हाथ पैर मारोगे उतना धंसते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे वक्त में अगर आप बार बार इवेल्युएशन लूज कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप ब्रेक लो और उसके बाद बैक टेस्ट करो, अपनी गलतियों को देखो, और उसके बाद वापस से आप दोबारा से एक चैलेंज लो, स्मॉल चैलेंज। जैसे अभी अभी सेम मैंने भी एक 10K का एक अकाउंट लूज किया है। इट वाज अराउंड ओनली 6,000 रुपीज। ओके, और अगर मैं दिखाऊं आपको तो फेज 1 मैंने बहुत बढ़िया किया था। फेज 1 वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेट मी जस्ट शो यू, इफ आई कैन शो यू both these. Yeah, so you can see this was my phase 1 account. You can see funding pips to sim. So it was my phase 1 account. So आप देखोगे कि फेज 1 में मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फेज 2 में क्या हुआ कि एक, I don't know ये क्यों नहीं वो हो पा रहा है, शायद ये अकाउंट्स को ना ब्लॉक कर देते हैं। मतलब एक बार अगर आप पास कर जाते हो फेज, शायद ये अकाउंट्स ओपन नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये यहाँ रिलोड होता जा रहा है, ये ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि जब फेज 1 था मेरा, उसको मैंने बहुत बढ़िया से पास कर लिया। एक वीक में मैंने आराम से अराउंड 8-10% बना लिए। लेकिन सेकेंड वीक में क्या हुआ कि मैं उसमें क्या कहते हैं उसको, लूजिंग स्ट्रीक में चला गया। जैसे ये अकाउंट अगर आप देखो, इसमें मैंने कॉन्जिक्यूटिव बहुत सारे लॉसेस किए, तो मैंने तुरंत ट्रेडिंग रोक दी। जैसे ही मतलब लॉसेस हुए, मैंने ट्रेडिंग रोक दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग करता रहूंगा लाइव अकाउंट में, या चैलेंज इवेल्युएशन फेज बाई करता रहूंगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं और ज़्यादा लॉस करूंगा। क्योंकि मैं भी इस सिस्टम में काफ़ी न्यू हूँ, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है इस सिस्टम का। अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी सारे कंजिक्यूटिव लॉसेस किए, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉफिट्स भी किए, ठीक है, बट हमेशा मैंने अपने रिस्क को कंसिस्टेंट रखा। आप देखोगे कि मैक्सिमम मैंने रिस्क 1% ही लिया, ठीक है। 1% से ज़्यादा कहीं भी रिस्क नहीं है। और बीच बीच में जैसे 2% रिवार्ड, फिर 2% रिवार्ड, फिर 2 लॉसेज, फिर 2-3 लॉसेज, फिर 4 लॉसेज, फिर 2% विन, फिर 2% विन, फिर 2% विन। तो ऐसे करके ये चलता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं लूजिंग स्ट्रीक में घुस गया, ठीक है। तो ये होता है कभी कभी, मतलब इट इज वेरी कॉमन। बट हाँ, एक चीज जो कंसिस्टेंट रही कि मैंने अपने रिस्क को 1% से ज्यादा कभी होने नहीं दिया, ठीक है। मैक्सिमम रिस्क आप देखोगे तो 1%, $10 जो है ये स्वैप वगैरह, स्वैप नहीं मतलब कमीशन वगैरह लग जाता है, या फिर स्लीपेज की वजह से ये $2-4-5 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने अपने रिस्क को बिल्कुल कैप रखा, ठीक है। रिस्क कैप रखा, रिवार्ड बिल्कुल कंसिस्टेंट था मेरा। ये जो $10, $6, ये जब मैं ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर देता था, तब ये $10, $6 मिले हैं, या -$4, ये सारे ब्रेक इवन ट्रेड्स हैं। बट मैंने ओवरऑल अपने उसमें, सोचो आप, मैंने इस 10% को मैंने कितना लंबा चलाया, ठीक है। सो 18 जुलाई से ट्रेड करता गया मैं इसको, 18 जुलाई से मैं इसको करता गया, और 13 अगस्त तक मैंने इस अकाउंट को ट्रेड किया, ठीक है। तो इससे फायदा ये है कि देखो, मेरा गोल अभी कोई पैसे कमाने का नहीं है, मैं कोई कोर्स या फिर कोई कुछ पैसे कमाने का है ही नहीं। मेरा गोल सिंपल ये है कि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है। अब उस ट्रेडिंग को सीखने के लिए मुझे लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करना जाना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मेरा गोल कंप्लीटली ये है कि मेरे को लाइव ट्रेडिंग का एक्सपोजर लेना है इस स्ट्रेटजी के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरे को लाइव ट्रेडिंग का एक्सपोजर नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग
कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है लाइव ट्रेडिंग का। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो मैं बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले से। ठीक है, बट वही है कि कभी कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करता था। जैसे कॉलेज में जब था मैं, तो कॉलेज में आप पता ही है कि कभी सेमेस्टर आ गया, कभी प्रोजेक्ट्स हो गए, कभी इंटर्नशिप हो गया, तो वो उतना मैं दे नहीं पा रहा था टाइम। ठीक है, फिर जॉब, कॉलेज के बाद फिर जॉब करने लग गया। ठीक है, तो उतना फिर टाइम दे नहीं पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो अब वापिस से मैंने, अब बीच बीच में लेकिन मैं आईसीटी सीखता रह रहा था। ठीक है, तो उसी वक्त मेरे को फिर ये टी ट्रेड्स का पता लगा। ठीक है, तो मैं उसको सीखने लग गया, और उसके बाद सीखने के बाद ये मेरा पहला चैलेंज था। ठीक है, ये पहला चैलेंज था जो मैंने टी ट्रेड सीखने के बाद बाई किया, परचेज किया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब इस रिजल्ट से। अगर मैं आपको वो फेज़ 1 का अगर अपना रिजल्ट दिखा पाता, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट था। शायद शायद मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँ फेज़ 1 का रिजल्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, लॉस करो बट बी अ गुड लूजर, यू नो, लाइक डोंट लूज। लाइक किसी भी ट्रेड में ये नहीं कि 5% रिस्क ले लिया, 3% रिस्क ले लिया, रिवेंज ट्रेड कर लिया। आप किसी भी दिन, किसी पर्टिकुलर डे पे मेरा 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं रखोगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इन अ डे। और ये चीज मैंने पूरे मंथ फॉलो किया है। किसी भी, और अगर आप मेरे किसी दिन देखोगे ना 2-3 ट्रेड, तो ये जैसे 2-3 ट्रेड जैसे गलती से ओपन हो गए। जैसे कि मेरे को एग्जीक्यूट करना था, मान लो आ, एक पर्टिकुलर जगह पे, बट प्राइस थोड़ी ऊपर चली गई, तो मैंने एग्जीक्यूट तो करा, बट जैसे ही वो नीचे आई या हल्की सी ऊपर गई, मैंने वहां क्लोज करके उसको फिर थोड़ा सा नीचे लगाया, तो वहां पे 2 पोजिशंस वैसे ओपन हो गए। ठीक है, बट ओवरऑल थ्रू आउट दिस 1 मंथ आई जस्ट ओपन 1 पोजिशन। ठीक है, सो कहने का ये है कि भाई, लॉस करो कोई दिक्कत नहीं है, बट बढ़िया लॉस करो। ठीक है, बी ए गुड लूजर। ऐसा नहीं कि, और अगर आप देखोगे कि मैं भी फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं गोल्ड में कर रहा हूँ, गोल्ड का प्राइस एक्शन सिमिलर होता है, बिल्कुल 110% सिमिलर है। आ, आपके जैसे अगर मुझे ट्रेड करनी है नेस्डैक, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, अगर मुझे, आई डू अंडरस्टैंड दिस इज योर ओनली वे। सो बट द थिंग इज कि ठीक है, ये आपका ओनली वे है, मेरा भी ओनली वे ही है। ठीक है, लेट मी टेल यू, दिस इज लाइक दिस इज ऑल्सो माई ओनली वे। बट द थिंग इज कि उससे क्या होगा, आपको सीखना तो है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि आप सीखोगे नहीं। ठीक है, और सीखने के लिए आपके पास अपना कैपिटल होना जरूरी है। जितना कैपिटल प्रिजर्व कर पाओ ऐसे टाइम पे, उतना बढ़िया। ठीक है, क्योंकि लर्निंग में आप कोई भी चीज, अगर आप मान लो एक लॉ प्रोफेशन में हो, ठीक है, तो जब तक आप उस प्रोफेशन के बारे में अच्छे से सीख नहीं जाते हो, तब तक आप क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, या आप मेडिसिन प्रोफेशन में हो, तो जब तक आप पूरे तरीके से डॉक्टर बन नहीं जाते, आप सर्जरी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और पूरे तरीके से डॉक्टर बनने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब, ऑपरेशन करना है किसी जिंदा इंसान पे, ऐसा तो नहीं है। आप पेपर ट्रेड करो, आप छोटे अकाउंट्स को बाई करो। ठीक है, छोटे अकाउंट्स बाई करो, आप बड़े अकाउंट्स मत बाई करो। और आफ्टर लॉस, आफ्टर टेकिंग एनी लूजिंग स्ट्रीक, और लेट सपोज यू लॉस्ट एनी इवेल्युएशन अकाउंट, सी, इफ, अगर देखो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, तब तो मैं हर, जब भी मैं फिर लाइव ट्रेडिंग कर कर के ही चीजों को सीखूंगा। ठीक है, बार बार अकाउंट ब्लो होगा, मैं बार बार लूंगा, मैं हिट एंड ट्रायल से सीखूंगा, अगर मेरे पास इनफ अमाउंट है। बट अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना मेजॉरिटी टाइम लर्निंग पे दूंगा, और जो ट्रेडिंग का टाइम है वो मैं कम दूंगा। ठीक है, इन द बिगिनिंग, और धीरे धीरे फिर उस टाइम को बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब्राहम लिंकन का एक कोट है कि इफ आई हैव टू कट अ ट्री इन 6 आवर, आई विल शार्प माई एक्स फॉर 5 आवर्स। ठीक है, सो
दिस कोट अप्लाइज वेरी वेल इन ट्रेडिंग। एक बार आपको स्किल आ गई तो फिर जरूरी नहीं है कि मैं जैसे 1% रिस्क लेके अभी ट्रेड कर रहा हूं। मैंने अभी जो आपको अकाउंट दिखाया उसमें मैंने 1% रिस्क लेके ट्रेड किया है, 1 महीना ट्रेड किया है $10,000 के अकाउंट को। कोई जरूरत ही नहीं है उतना करने का। अगर आपका स्किल आपको आ गया, ठीक है, तो हर एक चैलेंज को एक ट्रेड के जैसे ट्रीट करना है। जस्ट एक ट्रेड के जैसे ट्रीट करना है एक चैलेंज अकाउंट को। ठीक है, कि भाई एक चैलेंज अकाउंट बाई किया मैंने, एक ट्रेड लिया जस्ट 4% रिस्क के साथ या 3% रिस्क के साथ। ठीक है, पहला पहला अगर विन हो गया मेरा फेज 1 पास हो गया, दूसरा ट्रेड विन हो गया मेरा दूसरा फेज 2 पास हो गया। ठीक है, तो ये फेज भी आएगा आपके ट्रेडिंग में, बट अभी नहीं आ सकता है वो। ठीक है, उसके लिए आपको 4 महीना 6 महीना लाइव अकाउंट, बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तब जाके वो फेज आएगा आपके ट्रेडिंग में, कि जब आप एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफर्म चैलेंज बाई करोगे और उसको विथ इन 1 to 2 और 3 ट्रेड्स आप पास कर दोगे उसको। ठीक है, 1 to 2 डे आपको लगेगा बस उसको पास करने में। तो बट अभी वो फेज नहीं आया। अगर अभी मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं कई एक अकाउंट ब्लो कर दूंगा। हो सकता है 1 2 अकाउंट पास भी कर लूं, बट वो सस्टेनेबल मेथड नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल मेथड अभी अभी बस आपको ये है कि आपका रियल टाइम, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम रियल टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वो दे पाओ रियल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में। जैसे 1 महीना आपने एक चैलेंज बाई किया और उसको 1 महीना ट्रेड किया, इसलिए नहीं कि आपको पैसे कमाने, इसलिए कि भाई मेरे को रियल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग या फिर बैक टेस्टिंग, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैक होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाता डेमो ट्रेडिंग या फिर बैक टेस्टिंग। तो जब भी आप चैलेंज लो तो स्टार्टिंग में बस ये सोच के लो कि मुझे इस चैलेंज को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सस्टेन करना है, मुझे इससे पैसे नहीं कमाने हैं, बस मुझे इसको बचाना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बचा सकूं। जैसे 1 मंथ बचा लिया एक चैलेंज को, इवेल्यूएशन फेज था, 10% का ड्रॉडाउन था, मैंने उस 10% के ड्रॉडाउन से 1% का रिस्क लेके 1 महीना ट्रेड किया। इट मीन्स कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे खेल रहे हो। ठीक है, क्योंकि 1 महीना कंसिस्टेंट लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन में आपने हर रोज एक परसेंट का रिस्क लेके ट्रेड किया है। ठीक है, और 20 ट्रेडिंग सेशन आपने उसको चलाया उस अकाउंट को, तो मतलब ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो। बस आपको लगे रहना है 2 3 महीने और उसको ट्रेड करते रहना है, तो फिर स्लोली आप देखोगे कि आपका विन रेट जैसे ही अच्छा हुआ, बस इतना ही चाहिए। एक अकाउंट लो, उसमें बस 2 ट्रेड करो, 2 से 3 से 4 ट्रेड में बस वो पास। फिर इतना लंबा है ही नहीं। मतलब मैंने जितनों से भी सुना है या फिर जितनों को मैं जानता हूँ, उनका यही है कि भाई वो एक ट्रेडिंग अकाउंट बाई करेंगे और उसको दो मतलब 1 दिन या 2 दिन के अंदर पास करेंगे। ठीक है, या फिर फेल कर देंगे। उनके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट एक ट्रेड होता है। जैसे अगर वो 10 ट्रेडिंग अकाउंट बाई करेंगे, उनका विन रेट 60% का है या 50 40% विन रेट है उनका, तो वो 10 में से 4 ट्रेडिंग अकाउंट पास करेंगे। उन 4 में से मान के चलो कि उन्होंने तीन में तीन में से पे आउट ले लिया। अगर मैं बात करूं 100 के एक 10 अकाउंट का, तो लगभग 3.5 लाख रुपए का 10 अकाउंट आएगा। ठीक है, या 4 लाख रुपए का। चार चार 10 अकाउंट में से उन्होंने केवल 4 अकाउंट पास किया और 6 अकाउंट फेल कर दिया। ठीक है, अब जो 4 अकाउंट उन्होंने पास किया है, उसमें से मान लो कि चारों में से वो 2 2 3 3% ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकाल पाए, तो ऑलमोस्ट 12% प्रॉफिट उन्होंने निकाल लिया, मतलब $12,000। ठीक है, तो उन्होंने लगाया लगभग कितना, 4 लाख रुपए, और उन्होंने लगभग बना लिया $12,000। तो ऑलमोस्ट उन्होंने बढ़ लगभग 9 10 लाख रुपए बना लिए। तो उन्होंने कितना रिस्क टू रिवार्ड बनाया, 4 लाख रुपए लगाए और लगभग 10 लाख रुपए बनाए, तो 2.25 रिवार्ड उन्होंने पाया। ठीक है, तो ये फिर वैसे चलने लग जाता है, फिर आप मतलब उस तरीके से सोचने लग जाओगे, थिंकिंग आपकी इवॉल्व हो जाएगी काफी। बट वो तब आएगा वो फेज जब आपका विन रेट अच्छा होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। आप फिर एक एक अकाउंट के पीछे नहीं भागोगे कि एक अकाउंट पास करना है, ऐसा करना है। तो मेरा सजेशन ये है, स्टार्टिंग में बस आप ट्रेड को सीखने पे फोकस करो, जितना आप सीखने पे फोकस करोगे उतना बेहतर होते जाओगे।
और जैसे अभी सारे losses एक एक ट्रेड या एक इवेल्युएशन आपके सारे 1 लाख के लॉस को रिकवर कर रहा था, सिमिलरली वैसे ही होगा कल को भी। अगर आप एक एक दिन एक दिन लगेगा आपके लॉसेस को रिकवर करने में। तो नेक्स्ट डे पे हम फोकस करते हैं, बहुत बातें हो गई। भाई सारे लोग लॉस करते हैं, ठीक है। मैंने एक वक्त पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि यार ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हुआ भी जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता है। मतलब ऐसा लगता है जब आप लॉस करते रहते हो ना, बहुत सारे लॉसेस ले लेते हो, तो इस तरीके का थॉट आना बहुत कॉमन है, ठीक है। भाई कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी गलत बात पे हूँ या गलत करियर में हूँ। तो मैंने क्या किया कि जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स थे या जितने भी अच्छे ट्रेडर्स थे, मैंने सबको सबका वो करने लग गया। मतलब उनके स्ट्रीम्स या फिर जितना भी उनका पीएनएल था सबको इकट्ठा किया मैंने। और मैंने पाया, और जितने भी एफटीएम और इन सब पे जितने इंटरव्यूज हुए थे जिनके भी, सबको मैंने इकट्ठा किया। मैंने क्या पाया कि भाई सबके मेजोरिटी जो मतलब मेजोरिटी जो लोग इंटरव्यूज पे आए थे या मेजोरिटी जो लोग जो सच में प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, भाई उनका विन रेट 40 से 50% का विन बीच में था। 40 to 50% विन रेट थी उनकी, ठीक है। आप आपको जब यकीन ना हो, आप जाओ एफटीएमओ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, और सॉरी जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं एफटीएमओ ने अब तक के, आप सारे का वो उठा के देखो, उनके डैशबोर्ड पे देखना, ठीक है। 40 से 50% ही मिलेगा 10 में से 8 लोगों का, ठीक है। इट मीन्स कि भाई वो 60 बार, 10 में से 6 बार लॉस करते हैं वो लोग, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। 10 में से 6 बार लॉस करने के बाद भी। और हम अगर 6 बार लॉस करते तो हमें लगता है भाई पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। तो ये थोड़ा हम रिवेंज ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। हम फोमो होगा, रिवेंज ट्रेडिंग होगा, मतलब डाउट होने लग जाएगा, सेल्फ डाउट होगा। तो समझना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग वाज नेवर अबाउट सर्टेनिटी, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज को समझनी पड़ेगी। आपको प्रोबेबिलिटी के साथ पीस बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप प्रोबेबिलिटी के साथ पीस में नहीं आओगे, दिक्कत होगी। रिवेंज ट्रेडिंग फोमो ये तभी होगा जब तक आप प्रोबेबिलिटी के साथ पीस में ना आओ। सर्टेनिटी कभी नहीं है ट्रेडिंग में। आपको नहीं पता है कि 10 में से 6 ट्रेड अगर 4 मेरे विनर्स हैं, तो वो लास्ट के 4 हैं या फिर फर्स्ट वाले 4 हैं, ये आपको कभी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो वो हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी। 10 में से अगर 4 विनर हैं तो कौन से वाले 4, पहले वाले या आखिरी वाले या बीच वाले, ठीक है। तो आपको थ्रू आउट द ट्रेड्स यू हैव टू मेक योरसेल्फ काम एंड कंपोज्ड।
फिर मार्केट कंप्लीट कंसोलिडेशन में जा रहा है। वीकली अगर हम बात करें तो वीकली कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ। डेली ओपन हो लो लो क्रिएट कर रहा है, बट एट द टॉप मेरे को काफी सारे फेलियर स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वल हाइज है, रिलेवेंट इक्वल हाइज। ठीक है, तो मैं बाइंग सेटअप देखना चाहूंगा, और मार्केट जब भी इस तरीके का कैंडल फॉर्म कर रहा है, हम 2 दिन से देख रहे हैं कि ये 2 दिन का प्राइस एक्शन बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो हमें आज भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 6 रिवर्सल कैंडल क्रिएट कर दें। ठीक है, तो मैं 30 मिनट पे जाके 6 रिवर्सल कैंडल का वेट करूँगा। 2 3 4, ये 9:30 ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ पे भी मुझे एक रिलेवेंट स्विंग देखने को मिल रही है। लेट मी जस्ट मार्क। और हमें एक एसएमटी भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे वाईएम के साथ। ये रहा हमारा रिलेवेंट स्विंग। ठीक है, ये रिलेवेंट स्विंग है, और यहाँ पे हमें एक एसएमटी देखने मिल रहा है वाईएम के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग फॉर्मेशन सा हो तो रहा है, लेकिन ये स्विंग फॉर्मेशन में हम हमेशा एक रिवर्सल कैंडल देखते हैं। ठीक है, बट ये हमें एक रिवर्सल कैंडल नहीं मिल रहा है, ये ऊपर से रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। नेक्स्ट हम बाकी हम यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे भी आ जाएंगे, क्योंकि 4 AM कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, 4 AM कैंडल काफी बियरिश क्लोज हुई है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के फॉर्म होने का वेट करेंगे, और हम देखेंगे कि 15 मिनट का कैंडल कैसा फॉर्म होता है। और 15 मिनट का कैंडल कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ, जो कि अच्छा है। ठीक है, तो 15 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है, सो हम 10 AM के कंटिन्यूएशन ट्रेड देख सकते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक न्यू फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, की लेवल है। तो यहाँ पे अगर स्विंग फॉर्मेशन PIST मिलता है तो हम ले प्रेफर करेंगे। मार्केट ने एक लो फॉर्म कर दिया, रिलेवेंट लो। ओके, बट मार्केट ने किसी रिलेवेंट POI के पास से इस लो को फॉर्म नहीं किया है, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस लो को ले ले, या यहाँ पे कहीं स्विंग फॉर्म करे तो हम बाइंग ट्रेड में एंट्री करेंगे। ओके, मार्केट ने लो फॉर्म किया और कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ। तो अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट वापस आएगी नीचे। एक नीचे ये, और ये एक बुलिश क्या कहते हैं उसको, बल्कि ऑर्डर ब्लॉक, बल्कि अपोजिंग कैंडल्स है। ठीक है, तो हमें एक, अगर हम यहाँ से अगर बाइंग लेनी है तो हम यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं। ये हमारा ये हमारा SL रहेगा, ये हमारा TP रहेगा। ओपनिंग प्राइस जो है यहाँ पे हमें थोड़ा वो रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस पे जाके रिट्रेस कर जाए या रिवर्स कर जाए। Don't know why I wanted to place a sell limit, sorry, a buy limit, but
just kept on continuing its move to the downside. Let me just check. I think this happened because ES had not taken these lows. ES had not taken these lows. So that's why we had SMT with YM, but ES NQ ES को ज़्यादा वैल्यू करता है. ES ऐसा एसेट, ES जो है वो मेन एसेट के जैसे काम करता है. अगर जैसा ES जैसे जैसे चलेगा, NQ और YM के वैसे ही चलने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं. उस तरीके से चलने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं. यहाँ पे एक बायस था मेरा आज का. Here market has taken the low, okay, but it could not close below this low. Here we can see that market is completely inside this range. Check, is there any news today? March 7th, we do have non-farm payroll, NFP, and I think that's the reason why market was consolidating. This NFP week, and today also market is consolidating. Just see what it does. Market took the high and now trying to continue its move to the downside. We do have still objective left here, so there is a high chance that market will reach till this objective. Let's go 3-minute time frame, and I would like to see a retrace and then continuation. Okay, because if let's suppose I take an entry at around this area, our SL will be pretty high. Let's just wait. And also, one thing I don't like is that market has taken this minor objective, which is not good.
Here we got a continuation move which I wanted. It's 9:10 a.m. 30-minute, we can see that we took all these buy side liquidity and continue its move to the downside. Okay, this 9 a.m. candle opened, formed a wick, and now trying to continue its move to the downside. So everything is looking good. We can take this trade. Let's see what happens. Again, it then took our SL, and the reason I know because the market has already taken, or market had around taken this minor low. So that is the reason why. Sometimes I feel that future trading फ्यूचर इज डिफिकल्ट. फॉरेक्स या फिर गोल्ड का प्राइस एक्शन मुझे ज़्यादा इजी लगता है कंपैरेटिवली फ्यूचर्स के प्राइस एक्शन. ऑल्दो इसमें मूव बड़े आते हैं, लेकिन जो फ्यूचर्स का प्राइस एक्शन है उसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. अगर मेरे हिसाब से, मतलब जितना अभी तक मैंने बैक टेस्ट किया है और लाइव ट्रेड किया है, उससे मुझे ये मतलब फील होता है कि फ्यूचर्स का प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है. बट लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और वैसा बताते हैं कि फ्यूचर्स अच्छा चलता है, बट मुझे ऐसा, मतलब इतने टाइम में ट्रेड करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि फ्यूचर्स का प्राइस एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर गोल्ड या फिर फॉरेक्स से. Move ahead 10 a.m. It has already taken. So we have formed candle 2. Now we are trying to continue its move to the upside. Let's see. I will not take any trade, but I just wanted to see whether how it's continuing.
हमारे लिए डेली बेस क्रिस्टल क्लियर बता पाना काफ़ी मुश्किल है। आज मंडे है और हम देख सकते हैं लो ऑफ द डे को लिया है मार्केट ने, लो ऑफ द वीक फॉर्म हो चुका है और यहाँ पे एक स्विंग फॉर्मेशन हो रहा है, बट मार्केट कंटिन्यू कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, और मार्केट ने इसके 50% के लो 50% के लेवल को वायलेट कर दिया है। हम देखेंगे कि मार्केट को टैप करने के बाद हमारे को कोई स्विंग फॉर्मेशन देती है तो वो हमारे लिए अच्छा साइन आएगा। लेट्स वेट। So after taking this relevant swing, we are getting some sort of candle 2. So I would like to take trade candle 3. We have a V-shaped reversal. Okay, V-shaped change state of delivery. There is a high chance that market may take these lows. (9:30) is about to open. Sorry, 9 a.m. is about to open. Let's just wait. Okay, just to this low. Okay, perfect. Okay, we did not get any continuation so that we could take that trade. No, it was just continuation to the downside. We do have objective pending here, so it's a continuation candle. So I would like to take continuation trade. 2-minute time frame. Here we have an SMT with ES. Once we get a state of delivery, we would like to take that trade. Okay. To get, we are seeing some sort of continuation to the down. But I don't like this price action. Like you can see that the price action is really weak, not telling me that it wants to continue its move to the downside. So I will just wait. Okay. It just continued. This was a missed entry, I would say. मैं प्राइस एक्शन मुझे उतना सही लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं, बट वैसे ही एंट्री ठीक थी।
30 मिनट का प्राइस एक्शन नहीं, ठीक ही था। प्राइस एक्शन कंसोलिडेट करके नीचे कंटिन्यू कर रहा है, रीटेस्ट के कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक था प्राइस एक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे की तरफ। ओके, ट्यूसडे ने अपने लो को ले लिया है, प्रीवियस डे लो को, और अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं 1 आवर की बात करूँ तो 1 आवर 1 आवर की बात करूँ तो 1 आवर ने चेंज डिलीवरी दिया है, और यहाँ पर मेरे को एक रिलेवेंट स्विंग दिख रहा है। एक रिलेवेंट स्विंग है जिसको हो सके मार्केट लेने आ जाए। और आज 11 मार्च है, मैं अगर देखूँ 11 मार्च, तो हमारे पास 10 AM पे एक न्यूज़ है। करेंगे 30 मिनट पे एक मार्केट को इस स्विंग लो को लेके कंटिन्यू करने का। बढ़िया, ये हो रहा है हमारे पास 8 AM। ये दो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये है हमारे पास 9:33। वेट वेट, ओके, लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 minute टाइम फ्रेम। नाउ यार, आई वुड लाइक टू टेक अ ट्रेड। बायस बुलिश है, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट ने लो को लिया और कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ। हो गया। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वेट करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर्म होने का, तो तब तक फॉर्म हो सकती है, बट मुझे कंटिन्यूएशन में नहीं दिख रहा है। Okay, so took this loss. Take this.
It was some sort of secret trap profile. You can see that this went up, came down, just went up, then again came down, just went up, came down again. And it was some sort of secant strap profile. All right. Let's move to the next step. We are having some string formation, candle string formation, and now I want candle 4. In this range, market trying to continue its move to the upside to the low. Let's move to one more time frame. Here we do have a key level, so I want market to form a relevant swing from this key level so that we can look for our entry. Next candle. Okay. Was there any news or something? Today is 12th March. 12th March. Okay, we had core inflation rate. Okay. So market took out our buy side bias. Just waiting for candle. Let me just switch to 15-minute time frame so that if let's suppose, so here I can see that we are getting a candle, but no, it's I will wait for candle another swing to form. Then this is not a swing. Wait.
Here market continue its move to the downside. Okay. It's not a complete rejection. Okay. Just forming some sort of consolidation. So if next candle is bullish, I would like to take a trade. And now this is candle 2. So now I would like to take a trade in candle 3. So here we are having candle 2. Where is the 2 candle? Do we have to have spin status delivery? Okay. Let's wait. Kept continuing to downside. All right. It has invalidated our idea. The next day, and it's Thursday. Let's go to daily time frame and try to find our bus. You can find. Okay, so this is Monday, Tuesday, Wednesday. Trying to continue its move to the upside. Hit this key level, retrace, but still we have formed a swing point. So my expectation will be bullish. Okay, I would not like to take a sell because we are forming some sort of swing. So I would like for the market to continue its move to the upside. Okay. But the thing which I don't like is that market hit this key level and now trying and retraced. So let me just go to 1 hour time frame and check what's it's doing. Okay, so here what I can see that market has done some PAC, retraced, consolidated, again continue its move to the downside. So in that way we can look for a sell opportunity. We have to have a lot of swing failure trend line liquidity resting below. Okay, market has formed a swing. Market has formed a swing point for these opposing candles. Okay, let me just check. Yes, it has formed a swing low. So we can expect the market to continue till these ranges, till these lows. Let me just switch to 5-minute time frame and let me check if I can get an entry. It's an 8 AM. So here we can see that we do have a relevant swing, and apart from that, I cannot see any point of interest. It continues its move to the downside, but it's not looking good to me. Let's check the 30-minute time frame. To have this fair value gap also. Small fair value gap you can see. To have this fair value gap.
So what I would like to see, I would like to take the trade only when market forms the high inter candle change in state of delivery. Okay, you can see it just hit this key level, and now I want to see whether it's just retraced or what. Yep, it's showing retracement. Let me just mark this point. It's 30. Took this high. Now it's moved to the downside. I will wait. I would like to take an entry. 936, 930 open and continuing its move to the downside. Let's just wait for one more candle. This is not good. Now it has broke below the 9 a.m. candle. Okay, this is 9 a.m. candle and just crossed it and close. I don't know then it's closed this. Oh yes, it's closed this. Let's take that again.
So let's finish our backtesting session right here. We have already done a lot of backtesting today. Let's just see the result. So here in March, I took around one, two, like 8 trades taken, where 4 losers, so almost a 50% win rate. So that's a good win rate, I would say. None of them were break even or anything. It was just complete win or loss. Let's see, just loss or win, just 1:2. It's good. 50% win rate is, for me, it's a good win rate. So look, we had some losers, like 1, 2. We had 1, 2, 3, 4 consecutive losses, and then we have 2 winners in the beginning, then 4 consecutive losses, then 2 winners at the end. So total 8 trade. Total 21 trades, where 10 were winners and 11 losers, so almost 47% win rate. So it's good. I would say it's not a bad result, but there is some scope of improvement, I would say. Overall, it's a good result. Bye bye, happy trading.